morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And today in this video, we are going towards the like fraction. Yes, my dear students, today we will focus only and only on like fraction. Okay? As I already told you that what is meant by like fractions? The fractions having the common denominator. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो if you have the different fraction but the denominators of all the fraction is equal. अगर सारे denominators same हैं then we will call these all the fraction as a like fractions. Okay, that means what? You have the fraction, then you have the another fraction और आपके पास बहुत सारे fractions है but in this all the fraction ये सारे fractions में क्या है? Denominator is equal. But what is the meaning of denominator? Denominator tells us about the total number of parts in one whole. Again I am repeating, denominator is telling about the total number of parts in one whole. मैंने total number of parts नहीं कहा है, one whole object में कितने parts है, that is called, वो one whole को भूलना मत. Again I am repeating, don't forget one whole. Total number of parts in one whole object, it is called as denominator. That means this fraction, all the fraction have the total same total parts, same total number of parts in that object. That means as you can see here, this is 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. Okay, this is the object having a 4 total number of parts. In this object the total number of parts is 4. In this object the total number of parts is again 4, and in this object again total number of parts is 4. That means these all the fractions, these 4 fractions have same equal number of same parts, same number of parts. Yes, same number of parts है चारों के चारों में. And this fraction is called as the like fraction. यही है like fraction. ठीक है, यानी कि जितने भी फ्रैक्शन है आपके पास उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो सेम होना चाहिए. देन वी विल कॉल इट एज अ बोलो लाइक फ्रैक्शन. यस, इट इज अ लाइक फ्रैक्शन. नाउ ये तो समझ में आ गया. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द कंपैरिजन. कंपेयरिंग करना है, कंपेयर करना है. दैट मीन्स व्हाट? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर. वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शन बट ओनली लाइक फ्रैक्शन. आगे देखो, लिखना बंद करो, लिखो मत. ओके, लुक हियर. नाउ एज यू कैन सी इन द फर्स्ट फ्रैक्शन I have written 1 upon 4. That means this 4 is telling about the total number of parts and this 1 is indicating the number of parts that we are selecting. मैंने क्या किया? जितने पार्ट को कलर किया है I have written 1 by 4. So 1 upon 4 it is. Then 2 upon 4 it is. I have colored the 2 parts out of the 4 parts. That is 2/4 part. Okay. That is a 3/4 part. That is 3 upon 4. 3 by 4. 3 over 4. 3 out of 4. बहुत सारी चीजें हैं. That is you can speak the fraction in a different way. But this 3 by 4 is indicating this one. That means if I said draw a diagram, that means what? Draw a simple, इसका जो डायग्राम है, डायग्राम मतलब क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग. सिंपल 3 by 4 का एक ड्रॉइंग बनाना है. सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस. हो सकता है आप लोग ऐसा बनाओ, जस्ट लाइक अ सर्कल. देन यू विल कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. देन यू विल कलर द 3 पार्ट्स. सर्कल के फॉर्म में हो चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, whatever, but 3 parts are colored out of the 4 parts. That is 3 by 4 and this is 4 by 4, my dears. Total number of part is 4 and out of 4 the whole 4 part is colored. That means it is one whole. It is equal to one whole. Yes, it is one whole. Now अब हमको कंपेयर करना है मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये बताना है. So how can we compare it? Now tell me which one is the smallest fraction among these 4 fraction. इस 4 fraction में सबसे छोटा कौन सा है? 1 by 4. Because here we are selecting only one part. इसमें से कौन? Let us suppose that I have a cake. मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म में केक है. इसमें से सबसे छोटा वाला कौन सा केक है? छोटा सा हिस्सा, एकदम छोटा, is a 1 by 4. Yes, my dear. This 1 by 4 is smallest fraction. And which is the greatest fraction? सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा पार्ट. 4 by 4. I am speaking wrong. This 4 by 4 is not a part. It is a whole object. ये चारों पार्ट जुड़ गए. This 4 by 4 is not representing a part of whole. Listen, my dear students.
अब मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा. This 3/4, yes, this is a 3/4 and this 3/4 is representing part of whole. क्या बोला मैंने? This 3/4 is one whole. क्या 3/4 one whole हो चुका है? नहीं. It is less than one whole, है ना? one whole नहीं हुआ है, ये one whole से छोटा है, इतना हिस्सा उसमें नहीं है. But here this 4/4 is indicating what? It is representing one whole. It is not representing part of whole. ये part of whole नहीं है, ये पूरा का पूरा whole ही है. समझे? फिर से बोलता हूं, 4/4 जो है ये पार्ट ऑफ होल नहीं है, ये पूरा का पूरा होल ऑब्जेक्ट ही है. समझे? हाँ. सो दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू वन होल. ओके, ये इम्प्रॉपर में जाएगा. कैसे जाएगा? आई विल टेल यू लेटर. सो दिस इज 4/4 ऑफ फ्रैक्शन, बट इट इज लाइक फ्रैक्शन, बट दिस ऑल आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम. नाउ वी हैव टू कंपेयर इट. अब हमको पता है कि 1/4 इज लेस देन 2/4. 2/4 के कंपैरिजन में 1/4 छोटा है, कलर पार्ट. 2/4 इज स्मॉलर देन 3/4, छोटा है. अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स द दिस टू फ्रैक्शंस 3/4 एंड 4/4. सो फ्रॉम दिस टू डायग्राम यू कैन इजीली सी, आंख से देख सकते हो कि 3/4 इज स्मॉलर देन 4/4, छोटा है. दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 4/4 एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 1/4. अब ये तो डायग्राम के लिए, यहां पर डायग्राम था. इट इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व एंड टू मार्क अस सिंबल लगा सकते हैं. बट अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या? लेट्स टेक एग्जांपल. आई एम टेकिंग द एग्जांपल हियर. लिसन डियर स्टूडेंट्स, लुक फ्रंट. आई एम टेकिंग 5/9 एंड अनदर इज 6/9. Okay dear students, so I have here a two fraction. मेरे पास दो fractions है, and the first fraction is 5/9 and second fraction is 6/9. So always observe the denominator first of all. It is like fraction. क्या ये like fraction है? Yes my dear students, these two are like fraction because the denominators are common. That means you can say that here the denominator is 9, here the denominator is 9. That means one whole object is divided into 9 equal parts. सबके सब, इसके भी 9 टुकड़े हैं, इसके भी 9 ही टुकड़े हैं. ओके, दैट मीन्स व्हाट? व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट इट इज, यू आर द सेम ऑब्जेक्ट इज देयर, यू आर कटिंग द ऑब्जेक्ट इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. एक को 9 में से 6 पार्ट मिल गया, दूसरे को 5 पार्ट मिल गया. दैट मीन्स ऑब्वियसली सिंपल है कि 5/9 इज स्मॉलर देन 6/9. Or you can say that the 6/9 is greater than 5/9. So if you want to compare, what do you want to compare? If you want to compare the like fraction, so denominator is same. Okay, denominator is same है, कोई काम का नहीं, कंपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों के दोनों तो सेम ही है. Now we will compare the numerator. जितना न्यूमरेटर बड़ा उतना फ्रैक्शन बड़ा. इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जितना बड़ा रहेगा जितना न्यूमरेटर बड़ा रहेगा उतना फ्रैक्शन बड़ा रहेगा. समझ गए? दैट मीन्स 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9. इतना समझ गया? वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. अब मान लो, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं. लेट्स थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल. हाँ, ओके, लेट्स टेक 12/50. इट इज 12/50 एंड द सेकेंड वन इज 21/50. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक फ्रंट. अरे आंसर मुझे पता है कि ये बड़ा है, बट अब डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, लुक हियर. इट इज 12/50 and this is 21/50. So as you can see in these two fractions, the denominator is same. That means it is a like fraction. Okay, it is a like fraction. Now we want to compare these two fractions, and I already told you that if the numerator is greater will be the fraction. अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा रहेगा. That means this 21, listen, this 21 is greater than 12.
अब यार न्यूमरेटर में जो है आपका इधर 12 है, इधर 21 है, एंड ऑब्वियसली 21 इज ग्रेटर देन 12, एंड दैट्स व्हाई दिस 21 अपॉन 50 इज ग्रेटर देन 12 अपॉन 50। इसका मतलब ये है 21 अपॉन 50 जो है 12/50 से बड़ा है। वेरी गुड है जी। अरे इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूं जो कि आप अपने डेली लाइफ में रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो एनर्जी ज्यादा हो रही है आज, इट्स ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब एक काम करते हैं। लेट अस सपोज दैट यू आर सिटिंग ऑन द सोफा, ओके। आप अपने घर में सोफे पे बैठे हो एंड यू हैव वन कौन सा बड़ा फ्रूट होता है यार, ओके। लेट्स टेक यू हैव अ वन एप्पल, एक ही एप्पल है, बड़ा मतलब छोटा सा ही लो, ओके। देन यू विल कोरिलेट विथ, आप इजीली समझ पाओगे। लेट अस सपोज दैट यू आर ऑन दी सोफा, आप अपने घर में सोफे पे या चेयर पे बैठे हो एंड यू हैव अ वन एप्पल, एक एप्पल है आपके पास, एंड यू हैव अ वन नाइफ, एक नाइफ भी है काटने के लिए, ओके। नाउ यू आर ईटिंग अ एप्पल, बस खाने ही वाले हो, उतने में मैं बिन बुलाए मेहमान के सामान आपके घर में टपक गया। अब अरे यार सुधीर सर को भी आधा देना पड़ेगा, है ना। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ओके आई नो दैट आप दूसरा एप्पल दे दोगे, बट लेट अस सपोज दैट यू हैव ओनली वन एप्पल, हाँ आपके पास एक ही है। सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू शेयर दैट एप्पल। अब वो शेयर, आप वो एप्पल मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, दैट मीन्स यू विल टेक अ नाइफ एंड यू विल कट दैट एप्पल इनटू टू पार्ट्स। अब आपने उस एप्पल के दो टुकड़े कर दिए और आधा मुझे दे दिया और आधा आपने खा लिया। दैट मीन्स व्हाट, you are dividing one object into two parts. Listen dear students, you have a one apple and you are dividing that apple into two parts. That means here, that means it is 1/2 now. That means it is 1/2. This is half part. One is what? One apple is dividend. Yes my dear, one apple is the dividend. जो आपका न्यूमरेटर है that is called as dividend. मैं कहीं लिख देता हूं, ओके। 1/5 लिख रहा हूं, थोड़ी देर शांत रहो, ठीक है। न्यूमरेटर इज डिविडेंड एंड इफ यू आर कटिंग दिस वन ऑब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में काटा ना, डिवाइड किया ना, टू से दो डिवाइड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, टू डिवाइजर है, टू इज द divisor. Yes my dear student, the fraction is related with the division. fraction division से related ही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दोनों सेम ही है तो चलेगा, बट फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही है, यू आर गेटिंग द पार्ट ऑफ होल, बस, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे हम लोग स्टडी ऑफ पार्ट करते हैं, और वहां पे डिवीजन में क्या होता है, सिंपल है, 5 डिवाइडेड बाय 5 और 10 डिवाइड बाय 5, यू आर डिवाइडिंग द होल ऑब्जेक्ट बाय होल नंबर, ठीक है। तो वहां पर आपको होल पार्ट ही मिलता है, ठीक है। बट कभी कभी पार्ट पॉइंट में भी जाता है आंसर, और वो पॉइंट वाला पार्ट जो है वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, टुकड़े, स्मॉल पीसेस, ठीक है। सो उसको जाने दो, अभी इधर देखो, सिर्फ 1/2 इज हियर। दिस 1/2 इज अ फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर 1 and the denominator is 2. Okay dear students, again I am repeating, the 1 is the numerator, 2 is the denominator, and you are getting 1/2 after dividing the one object into two parts. एक एप्पल के दो टुकड़े किए हो तब आपको 1/2 मिला है, ठीक है। then you will get 1/2. okay, so here the 1 is the dividend, that means the numerator is dividend. Listen dear students, the numerator is dividend and the denominator is the divisor. Numerator is the dividend and the denominator is the divisor. अब मैंने 1/2 लिख दिया, यहां पर जो 1 है और ये 2 है, ठीक है, 1/2 है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर लेता हूं, ठीक है, एक मैं नंबर लेता हूं बहुत सिंपल वाला, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज वेरी सिंपल, अरे मिटक ना भाई, हाँ, ओके। now I am getting a number and number is very simple. किसको लूं, 100 को लेते, एकदम इजी है। Let us suppose that 100 is here, that means what, 100 is the dividend. अब 100 डिविडेंड है तो क्या है वो,
न्यूमरेटर में जाएगा, तो मैं इधर न्यूमरेटर में 100 लिख देता हूं और डिनोमिनेटर की जगह खाली छोड़ देता हूं. ओके, नाउ देयर इज अ स्पेस फॉर द डिनोमिनेटर बट द डिविडेंड इज 100 तो पक्का है भैया. चलो ठीक है, वेरी गुड. नाउ लेट अस सपोज दैट हियर इज आल्सो 100. आई एम टेकिंग द 2 times 100. इट इज 100, इट इज आल्सो 100. डिविडेंड इज सेम, दैट मीन्स डिविडेंड सेम है, डिविडेंड सेम है. ठीक है, ओके, बट गड़बड़ हो गई. इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा. हियर द डिविडेंड इज सेम, दैट मीन्स न्यूमरेटर सेम है. ठीक है, लेकिन मैं डिनोमिनेटर अलग अलग कर रहा हूं. ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर अलग अलग कर रहा हूं. आई एम राइटिंग हियर 10 and here I am writing 5. Okay, here I am taking 5, here I am taking 10. Okay, now 10 tens are 100, 0 0 0. If you are dividing by 10 you are getting 10, and if you are taking 5 you will get 20 here. Okay, 20 is a 100. Look my dear students, if your denominator increases, denominator बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा. समझे? अगर डिनोमिनेटर, अगर मैंने यहां 10 लिखा तो क्या हो जाएगा? इफ यू आर डिवाइडिंग बाय बिगर नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा. हियर द डिनोमिनेटर इज 5. अब अगर यहाँ पे 5 लिखता हूं, 10 को 100 को 5 से डिवाइड करता हूं, देन यू विल गेट 20. जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन, और जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा फ्रैक्शन. कैसे? एप्पल एक है, अभी हम 2 खाने वाले थे तो आधे आधा आधा आपको मिल गया, आधा मुझे मिल गया. बट लेट अस सपोज दैट आपके 4 दोस्त और आ गए. अब क्या करोगे? नाउ यू वांट टू टेक अ नाइफ, अब उसके और टुकड़े करने पड़ेंगे. यू विल गेट स्मॉल स्मॉल पीसेस. लेट अस सपोज दैट आपके घर में 10 लोग आ गए भैया, 10 लोग, एप्पल एक. अब क्या होगा? नाउ यू वांट टू कट दैट, उसको चॉप करना पड़ेगा और छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे. दैट मीन्स यू आर गेटिंग स्मॉल पार्ट. जितना ज्यादा कट करोगे, जितना ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे, उतना छोटा पीस हो जाएगा. 100 लोग आ गए ना तो पता नहीं मिलेगा क्या नहीं, हाँ, और छोटा हो जाएगा. बहुत छोटा हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? इफ द डिनोमिनेटर इज बड़ा, फ्रैक्शन इज छोटा. ओके, इफ द फ्रैक्शन, सिंपल है ना, इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड न्यूमरेटर इज ग्रेटर. न्यूमरेटर में कैसे क्या? न्यूमरेटर, नाउ you will correlate with the numerator with the number of apples. Let us suppose that you have the 2 number of apple, 2 apples है. अब खाने वाले हम 2 ही है, you and me. Okay, अब अपने आप को कोरिलेट करो मेरे साथ. I am coming to your home and you have a 1 apple. एक एप्पल आपके पास था, बट जैसे ही मैं आया आपने मुझे एक एप्पल और दूसरा दे दिया. That means what? Now the number of apple, that means the numerator is increasing, dividend is increasing. You are dividing 2 apples into 2 persons. एक आपका एक मेरा. लेट अस सपोज दैट हम 2 ही है, घर में 4 एप्पल है. नाउ व्हाट विल हैपन? द डिविडेंड इज इंक्रीजेस. डिविडेंड बड़ा हो गया, 4 हो गया. नाउ इफ यू वांट टू शेयर दैट 4 एप्पल्स विथ मी एंड यू, आप और मैं है, तो सो यू विल गेट 2 एप्पल्स एंड आई विल गेट 2 एप्पल्स. अब वो 4 जो थे वो 2 में बढ़ गया. दैट मीन्स व्हाट? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीजेस, फ्रैक्शन इज इंक्रीजेस. जितना न्यूमरेटर बड़ा उतना फ्रैक्शन बड़ा. समझ गए? सो हियर आई एम राइटिंग, लुक फ्रंट एवरीवन हियर. ये वाला पार्ट अनलाइक फ्रैक्शन का है. इफ द न्यूमरेटर इज सेम, अगर न्यूमरेटर सेम रहा और डिनोमिनेटर अलग अलग रहा ना, तो डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उतना वो छोटा रहेगा. समझ गए ना? हाँ, ओके. बट हियर पटरी मेरी कब बदल गई पता ही नहीं चला. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रैक्शन और धीरे से मैं अनलाइक फ्रैक्शन में चला गया. इट्स ओके, कभी कभी होता है. नाउ आई एम टेकिंग अ 1 प्रॉब्लम. ठीक है, आई एम टेकिंग हियर प्रॉब्लम 2/4. ओके, 2/4 and it is 1/4. Okay, 2/4 and it is 1/4. Okay dear students, so now I have a one again example 2/4 and 1/4. अब आपके घर में 2 एप्पल है,
खाने वाले 4 है. ओके, you have 2 apples और खाने वाले 4 है. There are 4 person. So when you will divide this 2 apple into 4 person, you will get half of part. 2 एप्पल के 4 टुकड़े करोगे तो आधा आधा मिलेगा सबको. That means you will get half part. है ना, ऐसे काट सकते हो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, this 2 by 4. Yes, I am talking about lowest terms. अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में लिखोगे तो ये 1 by 2 हो जाएगा. Why? Because it is 2 and it is 4. You can divide this 2 by 4 by 2. 2 से डिवाइड कर सकते हो तो यहाँ 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा. That means each person is getting half part. Each person is getting half part. But दूसरे वाले में केस थोड़ा सा अलग है. Here you have a 1 apple. एक ही एप्पल है, खाने वाले 4 है. That means what? Now you want to cut that apple. Now you will get 1/4 part. अब आपको खाने के लिए कितना मिला? आधे का भी आधा. उस आधे का भी आधा करना पड़ा टुकड़ा. You are getting small pieces than this one, and that means what? This 2 by 4 is greater than 1 by 4. Here the denominator is same. That means the divisor is same. Divisor तो same है भैया, but dividend is अलग अलग. Dividend, that means 2 is, if the dividend is increases, numerator जितना बड़ा, fraction उतना ही बड़ा. Let us suppose that for you and me are there. एक एप्पल था तो आधा हो गया. If you have the 2 apples, then you will get 1 1. That means you get 1 and I will get also 1. If let us suppose that 4 apples are there, that means you are increasing the dividend. Now number of apples is increases, then the number of apples that you are distributing among the 2 people is also increasing. जितने एप्पल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आप मेरे साथ शेयर कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको और मुझे मिलेगा. ओके, इफ यू हैव द 10 एप्पल्स, 10 एप्पल है, 5 आपको मिलेगा, 5 मुझे मिलेगा. इफ यू हैव द 100 एप्पल, 100 एप्पल है, you are dividing that 100 by 2, मैं और आप, then you will get 50, I will get 50. 200 एप्पल हो गए. 200 apples are there. Yes my dear, 200 apples are there and you want to share the 200 apples with me. मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, बहुत बड़ा दिल है आपका. और आपने क्या किया? देखो 200 एप्पल है, शेयर करने वाले 2 ही है, मैं ही हूं और आप ही हैं. That means what? Now you are sharing that 200 apple with 2 person. Then the dividend is increasing, number of apple is increasing, but the people, that means divisor is not increasing. हम 2 के 2 ही है. That means you will get 100 apples, I will get 100 apples. That means it is clear, if the numerator increases, fraction is increases. If the dividend is increasing, fraction is also increasing. And if the divisor is increasing, divisor बड़ा हो गया, अरे 2 के जगह 4 हो गए, और कम कम मिलेगा. आपको छोटे 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 पीस करने पड़ेंगे. That means if the denominator is increasing, fraction is decreasing. fraction छोटा हो जाएगा. So simple है. In the like fraction, we will compare the numerator. If the numerator is बड़ा, fraction will be greater. Okay? That means 2 by 4 is greater than the 1 by 4. I hope you understand about the like fraction. It is very very simple. न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, हमारे किसी काम का नहीं है. इफ द न्यूमरेटर इज बड़ा, ग्रेटर, फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. सिंपल सादा हिसाब है. आई होप यू अंडरस्टैंड टू द कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड है जी. ओके, सो क्विकली नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक दिस 3 क्वेश्चंस, and after the writing this, we will take only few examples. Do ya ascending and descending order we will take. Okay, ascending and descending order we will take now. And one more thing, I am making a dedicated video for the proper, improper and mixed numbers. It is in processing. थोड़ा सा animation बचा है. After the animation you will get your video. Okay, quickly note down. Yes dear students, please quickly note down in your maths notebook. Okay, after this we will take one example. Oh wait a minute. Already 24 minute is done. 24 minute हो गए. So I am taking the example here only. Next video में example लूंगा, ठीक है? Look everyone here. 1 by 7, 4 by 7. Okay, 4 by 7. Then I am taking
3 by 7 and 6 by 7. Now listen dear students, we want to write this four fraction in the ascending order. Yes my dear student, ascending order में इसको circle करते हैं, then you will get and then you will understand about that. Okay, ascending order में करते हैं, and ascending order that means what? Smallest fraction सबसे पहले. So now tell me which is the smallest one. इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? इन चारों में सबसे छोटा यही है, because the numerator is smaller. If the numerator is smaller, fraction will be smaller. That means 1 by 7 is come at the first place. 1 by 7. उससे बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा बड़ा चाहिए न्यूमरेटर. 2 by 7 तो है ही नहीं. Then 3 by 7, yes, the 3 by 7 will come at the second place. It is slightly greater than 1 by 7. 3 by 7 जो है वो 1 by 7 से थोड़ा सा बड़ा है. Now we have to move towards the next two fractions. So it is 4 by 7 and 6 by 7, and the 3 by 7 is slightly smaller than 4 by 7. थोड़ा सा छोटा है बस. 4 by 7 जो है वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा. I am talking about ascending order, smallest, greater, greater, greatest. Okay, and 6 by 7 will come at the fourth place. I hope you understand about this, and you have to solve the exercise 6.5 A question. 6.5 का क्वेश्चन नंबर A आपको सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर B नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन. समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड. आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है. It is already 25 to 26 minutes long. So we will talk about next topic in the next video. Okay, have a good day. Bye bye. And now you can note down. Dear students, now you can note down in your maths notebook.